इस वक्त आकाश चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर आकाश चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और आप जिस तरीके से ये हमले देखे जा रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही हैं, किस तरीके से देखते हैं ये हमले कितने घातक हो सकते हैं और ईरान पर इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आकाश जी? दिव्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब जीबीयू बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूएस ने ईरान के ऊपर गिराए थे। उस समय भी हमें लगा था कि एक एस्केलेशन होगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम ऑन द ग्राउंड देखें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझे तो ईरान की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कंबाइंड जो माइट है यूएस इजराइल की उसको टेक ऑन करे। अभी जो करंट हमें मिसाइल्स का नहीं पता उन्होंने कौन सी यूज करी है, लेकिन जनरली F-35 यूज हुए हैं इस तरह की स्ट्राइक्स में। ऑल्सो अब जो एस्केलेशन की हम बात करें, अब आप डिसेप्शन टैक्टिक्स देखिए कितनी बढ़िया थी। एक तरफ ईरान और यूएस की डील जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, दूसरी तरफ मोदी जी का विजिट चल रहा है। जैसे ही विजिट खत्म हुआ, ईरान ने सोचा भी नहीं होगा कि इजराइल इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है उनकी विजिट के पीछे, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए आपको बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। और जैसे ही वो अपनी कंट्री वापस पहुंचे, एक दो दिन के अंदर उन्होंने अटैक कर दिया है। अब अगर हम इसकी एस्केलेशन की बात करें, 30+ साइट्स पे अटैक हुआ है। ऑफ कोर्स जो लास्ट टाइम भी एस्केलेशन हुआ था जहां पर ईरान अपनी मिसाइल्स यूज करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करेगा, ड्रोन वॉरफेयर होगा, लेकिन इसका एस्केलेशन उसके बाद कितना होता है ये अब करंट ईरान की रजीम के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इतनी माइट नहीं है, हम चाहे एयरफोर्स की बात करें चाहे नेवल पावर की बात करें, ईरान की इतनी पावर नहीं है कि वो इनकी कंबाइंड माइट को टेक ऑन कर सके। लेकिन आकाश जी, ये भी समझना चाहेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि ईरान तो दुनिया के लिए खतरा है और हमने उस खतरे को ही खत्म करने की कोशिश की है क्योंकि वो लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा था। ऐसे में ये जो लंबी दूरी की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कहते नजर आ रहे हैं, भाई मैं तो अमेरिकन की रक्षा कर रहा हूं। देखिए देवा जी, एक चीज हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जहां पर भी वॉर चल रही है उसका सबसे बड़ा जिसको फायदा होता है वो अमेरिका है, जितनी बड़ी उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं। अब जब हम ईरान की बात करते हैं तो क्या यहां पे वो सेम स्टेट नहीं आता जो 2000s में, अर्ली 90s में इंडिया के साथ था, जब हम अपनी न्यूक्लियर पावर डेवलप करना चाहते थे और अमेरिकन हमारे अगेंस्ट थे। आप किसी भी कंट्री को, इतनी बड़ी पावर को सिर्फ इररेस्पॉन्सिबल है ये बोलकर उसकी न्यूक्लियर पावर को एक समय तक तो रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, वो अपनी न्यूक्लियर जो पावर है उसे डेवलप करेगा ही करेगा। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हर कंट्री के पास हैं, आप उन्हें प्रोक्योर करने से नहीं रोक सकते हैं। ये टाइम टू टाइम की बात है कि किस समय किसका पलड़ा भारी है, कौन सा कोalition फॉर्म हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स कैसे फॉर्म हो रही है। तो अगर आने वाले समय की हम बात करें, हो सकता है भी कुछ साल लगे, लेकिन ईरान भी आने वाले समय में आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर बनेगा और वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को प्रोक्योर करेगा। और अमेरिकन के ऊपर आप इन चीजों में ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर वो किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके पास 10 रीजंस हैं जो वो सिर्फ वही जस्टिफाई कर सकते हैं जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, बने रहेगा आकाश जी हमारे साथ, और संजीव त्रिवेदी हमारे डिप्टी एडिटर जो है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, वो आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है, लग नहीं रहा है कि ये हमला जो है वो यही थमने वाला है, अगले 4 दिनों तक भी चल सकता है, इससे लंबा भी चल सकता है। लेकिन अब ईरान में अगर बात की जाए तो इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार आप भी बता रहे हैं, अभी आकाश चोपड़ा जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये जो हमला है, जहां एक तरफ बातचीत चल रही थी उस बीच ही हमला कर दिया गया, यानी ईरान तो पूरी तरीके से इस वक्त सकते में होगा कि ये हुआ क्या? ठीक है, संजीव से इस वक्त बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे दो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर आकाश चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जो है वो भी जुड़ गए हैं, आपसे उनका तारुफ कराऊंगी। लेकिन आकाश जी, एक बार फिर से समझना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार विजुअल्स में दिखा रहे हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, ये मिसाइल्स धुएं का गुबार जिस तरीके से आसमान में नजर आ रहा है, एयर स्पेस ईरान ने अपना बंद कर दिया है। इस वक्त ईरान में पूरी तरीके से तनाव का माहौल है, और चूंकि आप भी बता रहे हैं कि एक तरफ तो बातचीत चल रही थी और एक तरफ अमेरिका और इजराइल का ये संयुक्त ऑपरेशन ईरान के ऊपर, कैसे उभरेगा ईरान? जवाबी कार्रवाई तो अभी दूर की बात है, लेकिन ईरान में इस वक्त क्या स्थिति होगी? देखिए, ईरान में ऑलरेडी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और ये लास्ट ईयर भी बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो हुआ था, जहां पर लग रहा था कि बातचीत चल रही है, थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुई बातचीत, लेकिन इमीडिएटली एक सरप्राइज अटैक जो B-2 बॉम्बर्स ने किया था लास्ट ईयर अमेरिकन, और वहां सेम चीज अभी हुई है, जहां पर उनकी टॉक्स जो है वो फेल हुई हैं। लेकिन ये
जो टॉक्स हैं ये भी मैं बोलूंगा ये सिर्फ एक सामने का मुखौटा है। जो पीछे की बातचीत चल रही होती है, जो पीछे प्लानिंग चल रही होती है, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इतने बड़े अटैक को अगर आप अंजाम देना चाहते हैं जहां पर 30+ साइट्स को अब एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए होती है। तो इसका मतलब है वो जो टॉक्स थी वो चाहे सक्सेसफुल होती या ना होती उससे फर्क नहीं पड़ता था, ये एक प्री प्लान्ड अटैक है। अब अगर हम ईरान की बात करें, जैसे मैंने बताया कि ना तो ईरान के पास इतनी केपेबल एयरफोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस तेहरान और तेल अवीव के बीच में काफी ज्यादा है। और जो फाइटर्स और जो प्लेटफॉर्म्स यूएस और इसराइल पोजेस करते हैं, उससे वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन आप लैंड अटैक कर नहीं सकते। तो ईरान की जो इतनी बड़ी लैंड फोर्स है वो डायरेक्टली अटैक में आएगी नहीं। उनके पास जो मिलिशिया है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो इसराइल के आसपास है, जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। लेकिन ईरान के जो इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आयरन डोम वगैरह, वो वेल केपेबल है इन्हें हैंडल करने के लिए। लेकिन अगर हम यूएस की बात करते हैं तो देखिए, यूएस हमेशा सबसे सेफ प्ले करेगा। यूएस के ऊपर कुछ नहीं होना। उनकी जो फ्लीट है वो ओशन के अंदर पूरी तरह से डिप्लॉयड है। वो और इसराइल मिलकर ही ये अटैक को आगे लेकर जाएंगे। और कुछ अभी आप क्रूज देखेंगे, मिसाइलें, आकाश जी, कुछ क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं। ये जो क्रूज मिसाइलें हैं ये कितनी खतरनाक होती हैं? देखिए इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जैसे ब्रह्मोस यूज करी थी, या जो आप हमारी स्कैल्प मिसाइल्स हैं, हैमर मिसाइल्स हैं, ये उसी तरह की उनके पास टॉमाहॉक वगैरह मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं। अब ये जब भी आप किसी के ऊपर अटैक करते हैं इतने बड़े एरिया पे, इतने सारे टारगेट्स पे, तो वो सिर्फ एयर टू सरफेस अटैक्स नहीं होते। वो सी टू सरफेस भी हो सकता है उनकी शिप से, वो सरफेस टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हो सकती हैं, वो एयर टू सरफेस वेपन्स भी होते हैं, एक कंबाइंड होता है, प्लस ड्रोन अटैक्स भी किए जाते हैं। और अभी आप देखेंगे ईरान भी सिर्फ यही टैक्टिक्स अपनाएगा, क्योंकि ईरान के पास इसराइल को अटैक करने के लिए सिर्फ यही वेपन्स हैं, जो उनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और उनके ड्रोन्स हैं। ना उनकी नेवी केपेबल है, ना उनकी एयरफोर्स केपेबल है, और लैंड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके आकाश जी, लौटूंगी आपके पास, क्योंकि लगातार देखिए अब ईरान की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये लड़ाई शुरू की लेकिन खत्म हम करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि बेशक ये अचानक से हुआ हमला है, लेकिन ईरान भी अब ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी ये बनाता नजर आ रहा है कि आखिर जवाबी जो कार्रवाई है वो कैसे करनी है और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब अमेरिका और इजराइल को देना है। इस वक्त एक और एक्सपर्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 24 में। अब आपसे भी जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी कि आखिर किस तरीके से आप इस हमले को देखते हैं, जिस तरीके से ये ज्वाइंट ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे किया गया है, और वो भी जहां बातचीत का दौर चल रहा है, वहां पर अमेरिका लगातार मिसाइल जो है वो दागता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, ये साफ हो गया था कि जब ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे और जिस प्रकार से उन प्रदर्शनों को लेके राष्ट्रपति ट्रंप और जो ईरान की सरकार के बीच जो आप कहें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जिसमें साफ साफ जो है खमैनी प्रशासन ने जिस तरीके से खुलकर ट्रंप की आलोचना की थी, ऐसा साफ लग रहा था कि, और ट्रंप ने ये साफ किया था कि जो जिस प्रकार से इन जो प्रदर्शनों को दबाया जा रहा है, वो एक कोशिश साफ टकराव की स्थिति नजर आ रही थी। और वो और इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो है जो गल्फ ऑफ होर्मुज में अपना जो है अपना अभ्यास किया था, तो ये साफ था कि ये टकराव बहुत दिनों तक टलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार बयान दे रहे थे कि नहीं, हम ईरान को जो है लोगों के हाथ में सौंपेंगे, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि अमेरिका वहां रिजीम चेंज चाहता है। और ईरान ने भी अपने बयानों में, खमैनी सरकार ने साफ कर दिया था कि वो ये किसी प्रकार के ऐसे प्रयास का मुंहतोड़ जवाब देंगे। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो वैश्विक जो व्यवस्था है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो वैश्विक व्यापार की स्थिति है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि काफी चिंताजनक होगा। क्योंकि ईरान जिस प्रकार से इराक पे आक्रमण किया गया था, एक न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के होने का आरोप लगाते हुए, और वह एकदम से वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी एक जो IAEA ब्रोकर जो टॉक चल रही थी, उसको ट्रंप ने एकदम से बीच में ही छोड़ दिया। और उसके बाद बार बार, और जो पिछले दिनों जो उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके पास जो अटैक किया गया, तो ये साफ है कि
किसी भी स्थिति में ट्रंप प्रशासन, अमेरिकी प्रशासन जो है वो ईरान में एक रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है, और वैसा ही होता जो है इन आक्रमकों से दिखाई लेकिन मयंक जी, देता है। ईरानी मीडिया के हवाले से कुछ खबर सामने आ रही है कि तेहरान में इंटेलिजेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खामनेई का परिसर और जितने भी जो ईरान के एटॉमिक एनर्जी संगठन है उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम कुचल देंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अमेरिका और इजराइल के इस हमले का जवाब देने में ईरान कितना सक्षम है? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अगर आप अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान अकेले आप उनके शक्ति का आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका का पलड़ा भारी भारी दिखेगा। लेकिन आज की जो युद्ध की स्थिति है, हम यूक्रेन और रशिया वॉर में देख रहे हैं, और जिस प्रकार से ईरान के पास परमाणु शस्त्र की क्या क्षमता है ये पूरे विश्व को नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये लिमिटेड वॉर ही होने की, जो सीमित युद्ध जो हो रहा है, चाहे इजराइल में हुआ हमास को लेके या रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन कमजोर होता हुआ दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि 1 या 2 दिन में ही रूस जो है उसको प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिस प्रकार से पूरे नेटो देशों का और अमेरिका का समर्थन पीछे से मिला, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ईरान के पक्ष में रूस और चीन जैसे देश जो है वो खड़े होंगे। हो सकता है टर्की का भी साथ मिले, तो और तमाम जो है जो वेस्ट एशिया के देश है जो अमेरिकी पाले में नहीं है, खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई को हम छोड़ दें तो ऐसे में आप ये एकदम से ये आकलन लगाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। हाँ, लेकिन बार बार अगर हम जो प्रदर्शनों की बात करें तो जो लगातार एक अंतराल के बाद ईरान में मानवाधिकार के प्रदर्शन, महिला अधिकारों के लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, और खमैनी सरकार, खासकर जो इस्लामिक सरकार है, वो इन प्रदर्शनों को दबाने में, कुचलने में सफल रही है। उनका हालांकि आरोप रहा है कि इन प्रदर्शनों को भी अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। अगर ये समर्थन होने के बाद भी अगर इस्लामिस्ट गवर्नमेंट जो है, खमैनी सरकार, इन प्रदर्शनों को कुचलने में सफल रही है, इसका मतलब अभी वहां के समाज पे और वहां की राजनीतिक व्यवस्था पे उसका पूरा नियंत्रण है। तो ऐसे में वो पूरी शक्ति के साथ कोशिश करेगी कि अमेरिका और इजराइल के इस आक्रमण को किस तरीके से विफल किया जाए या इसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए। तो ये कहना अब मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी कि अभी ये युद्ध किस तरफ जाएगा या किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अब हम कन्वेंशनल वॉर वाली जो परंपरागत युद्ध की स्थिति में या ऐसी वैश्विक व्यवस्था में नहीं हम हैं। हम आज ऐसी व्यवस्था में हैं कि जो तकनीकी के द्वारा जो एआई ड्रिवन अनमैन्ड व्हीकल्स है, ड्रोन्स हैं, तमाम ऐसे जो तकनीकियां हैं, उन्होंने युद्ध के स्थिति को ही नहीं, युद्ध के परिणाम को और युद्ध के निष्कर्ष को भी प्रभावित करने में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ठीक है मयंक जी, आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा। इस वक्त इजराइल से हमारे साथ नोवा लाइव जुड़ गई हैं। नोवा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त इजराइल में क्या हालात है? इजराइल ने ये जो अटैक किया है, नोवा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हम नोवा से भी जानकारी लेंगे, और इजराइल में इस वक्त क्या हालात हैं जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया है उसके मायने भी समझेंगे। संजीव त्रिवेदी हमारे डिप्टी एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश चोपड़ा, स्क्वाड्रन लीडर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि अब भारत के लिहाज से एक सवाल यहाँ पर इसलिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल वो गए, वहां पर जिस तरीके से गर्मजोशी देखी गई, भारत क्या इस पर रुख रख सकता है? देखिए, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है, इसके तुरंत बाद अगर ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या दोनों के बीच कोई लिंक है? हालांकि सामने तो कुछ दिखता है नहीं ऐसा, और भारतीय प्रधानमंत्री उन चंद देशों के राष्ट्राध्यक्षों में हैं जो कि इजराइल की यात्रा पर दूसरी दफा गए थे, और वहां आमतौर पर अमेरिकन ही जाते हैं। तो ये जो
आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं उनकी यात्रा और इस तरह के इस बारे में कोई पुख्ता चीज तो सामने नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि भारत अपने आप को तटस्थ रखता है जहां तक युद्ध का सवाल है। और ये भी सच है कि इजराइल के साथ हाल के 10 वर्षों में हमारी मित्रता पहले की अपेक्षा बढ़ी है और हम फिलिस्तीनियों के कॉज को लेकर के भी बहुत ज्यादा संजीदा हैं। और हमने हमेशा इस बात को मेंटेन किया है कि हमारा देश बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है, और हमेशा हम पक्ष शांति का लेते हैं। लेकिन आप जानती हैं कि कूटनीति में कुछ बातें जो हैं वो कही जाती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो कहीं नहीं जाती हैं। तो भारत का जो पक्ष है वो ऊपर से तो बहुत स्पष्ट है कि आखिरकार हम अपने स्टैंड से क्यों डिगे, ना हमारा लाभ है ना हमारा नुकसान है। और भारतीय जो हमारे हैं वहां उनकी सुरक्षा को लेकर हम जरूर चिंतित हैं। अभी जैसे हमारा विमान ओके संजीव, एक सेकेंड आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त नोवा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि इजराइल में मौजूद हैं और सीधी जानकारी इजराइल से हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नोवा, वेलकम in News 24. I just want to ask you that US and Israel launched preemptive attack against Iran. Why? Yes, as you can see, we started an alert. Now I have to go back into the, yes, we have an alert in the next 2 minutes. Can you show me? I'm at my in-laws. This is the alert. An hour and a half ago, we had an alert across the country asking us to remain next to the safe zones and bomb shelters. The reason is that this morning, Americans and Israeli armies launched an attack on Iran. This is the fourth round we have in Iran for the past 2 years. We hope this time will be the final one that will close the attacks and threats by the Islamic regime of Iran. I gotta say that we have been prepping this for almost 2 months now. We had enough time to understand. They caught me at my in-laws in the kibbutz in the south in the morning. I got to say that mentally we are never prepared, but logistically, I think that every citizen in Israel is very much prepared for what's happened 2 hours ago here in Israel. Okay, Nova, Israel launches biggest strike on Iran, and you just want to say that why it just happened. But we also wanted to know from your side that what kind of visuals are you seeing? वहाँ पर माहौल क्या है? What kind of environment in Israel right now? So we had helicopters, a lot of helicopters and planes, fighting planes above our heads. Again, I'm in the south. I'm not in Tel Aviv. Usually I live in Tel Aviv. You caught us on a holiday. This is Purim holiday this morning. There's a lot of action in the sky that we can hear, feel, and see. But so far, we haven't seen anything on the ground. No bombs as yet. No real alert yet. As I said, when I started talking to you, we got an alert that we need to stay close to bomb shelters. All of the kibbutz now are heading into bomb shelters, and we have to remained until it's over. So I can share some footage from that. I think that in the next 24 hours, we will see a lot of the effects of the Iranians striking back. ओके नोवा, बने रहिए हमारे साथ। संजीव हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, हम चाहेंगे कि आप नोवा से कुछ सवाल कीजिए और हम लगातार अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में इस वक्त किस तरह से जंग जो है वो जारी है। संजीव, आप नोवा से कुछ सवाल कर सकते हैं। Nova, welcome to our TV channel. We are News24 from India, and we can actually understand as to what kind of a situation you are there in right now. Today morning, when the Israelis dropped bombs on Iran, obviously there must have been some preparation. You must have been informed, and as you say, you suggest that you basically are around a bomb shelter. What other preparations have you been asked to do in the event of a full-scale retaliation from Iran? So thank you, Sanjeev. I think that in the last 2 months, and we're very prepared, as I said, because we had the war in May and June with Iran that was very short but hectic. We have been asked to be prepared in the sense of having enough efficient food, water, medicine, battery in a state of emergency that all the country will be disconnected for at least a few days.
Some cities and citizens are even have a small portion of petrol or water jerry cans. This is not the situation here. Most of the friends, family I know have been stocking for water, medicine, food, and also electronics like portable batteries so they can use their phone. But as I said, mentally, we have been prepping for this, but it caught us by surprise. We're very scared, but at the same time, very cautious. And we're used to it in a lot of ways. And we hope it's going to be the last attack and war with the Islamic regime of Iran. Yes, Nova, we very well understand your position. And since October 7, Iran and Israel and the entire relationship between the two countries we've been observing, and we pray for your safety, your country's safety. And if you can actually understand, there are certain things we would like to know from you. And first of all is that, do you actually perceive that Iran is in fact a big danger for Israel and the kind of preparations that it has been making? Israel is in danger because of the Iranian military preparations. I'm sorry, I didn't hear your last question about Iran. We basically are trying to figure out as to what was the immediate cause for Israel to launch this kind of an operation this morning. Yes. As I said again, I think that the revolution or the riots of the Iranian people against the Islamic regime in the last 2 months has been the catalyst for this. Americans have sent a lot of groups, missiles, and warships, and you know, a lot of information I can't withhold at the moment for the past week, month and a half. So we have preparing for this. I think that Israel is and always have been the only democracy in the Middle East. So we have a good reason, and also we are in purpose to free the people of Iran that wants to have a better future for themselves. Islamic regime has made them suffer, and also Israelis suffer quite a lot for the past 40, 50 years. I think this is the reason that Israel and America together has began this strike. That I will say again, we have preparing for this. We have known this is coming for the past 2 months. The reason is the freedom of democracy over darkness, as I can say. Noah, as I talk to you, we have gathered that there have been retaliatory strikes from Iran, and they have actually started fighting against Israel. Now, what is the kind of situation in your country right now? So, yes, as I told your colleague, when I started talking to you, we got another message on our cell phones alerting that in the next few minutes, we have to stay inside the bomb shelters and safe zones. I think the alarm would start here in a few seconds or minutes. I don't know. I'm standing very close to the bomb shelters next to my in-laws in the south. We hope this strikes is not going to be so harsh like the last few strikes. I was in Tel Aviv last war, and I remember the feeling of being in a bunker underground and feeling direct hits not far from my house. I was pregnant at the time, by the way, the last war. I was 8 months pregnant. Now I have a baby here at home. So even though we're very prepped for this, it's still very scary. I think that our children and also the Iranian children will not want to live in this constant state of war and threat. And also I want to mention that just 2 days ago, Modi ji, the Prime Minister of India, have left Israel. It was a very festive 2 days here in Israel. I had the great honor to meet him as well. And we feel that India and Israel people has very shared and common values. And we want to thank you again for supporting us in this hard time today, this morning. That's so very nice of you, Nova. And we are actually concerned about the security of you and the Israeli people. But at the same time, we also would like to know as to what is the kind of preparations that you actually make when such kind of threats are there for you. Your bunkers and your kibbutz, are they all prepared and you can stay there
for days together if this kind of attack lasts for days? Yes, as I said again, at my home in Tel Aviv, we have a bunker underground. Most houses, buildings, and local institute and places in Israel has a bomb shelter, safe zone, or a bunker inside the apartment. We call it mamad, a safe room, a secure safe room. Israel is very, very prepared. We have drills all the time, even in times of peace. I would say I was born into a war and I fought many wars myself. I'm ex-military. Most of the Israelis are ex-militaries, officers. I wouldn't say it makes it easier for us, but we are very much prepared and we know the drills. I can say on a personal note, as I suffered the last war being pregnant, I think that once you have children, it makes it a bit different for you. No, yes. We in India are always impressed by the kind of spirit that the Israelis show. But at the same time, this must also mean for you closure of all the schools, colleges, all the educational institutions, all the civil places. Everything must be shut down right now. Yes, you're right. A few minutes after the alarm today, we got a message that all the activities, outdoors activities, schools, universities, everything that is not important for the immediate need of war, except pharmacies and food stores, are going to be closed in the next few days. We don't know how much time it's going to take, but we know that as of today, we're in an emergency state. I can say in a state of war because we have seen it before, and we are sure this is how the beginning of war looks like here. Yes, there was a situation of war in June, which is like 7 months ago. And now there again a situation that is visiting you Israelis there. Do you actually think that a war is a solution, a final all-out war, which can probably do away with such kind of threats that you have actually been facing? Do you think that is the need of the hour? I gotta say that war and being always in fighting mode and sending our kids to the army, it's not a solution we want, but it's a solution we need at the moment. Israel is on constant threat from all of our neighbors. We are a very peaceful nation and a very peaceful people. If you have ever met Israelis, we are a kind, peaceful people, but we have no other choice. I would say that if in India tomorrow you will take all of your guards from your borders, you will suffer again also. We have no choice but to keep our borders safe and our army always prepped for threats from in-house and out. Not just from the borders, also from countries like Iran. So individually for a normal civilian in Israel, what does the situation mean? Are they actually prepared always for this? Or do you think that this is a situation which will pass off and this is only a temporary phase? Or is it that you think that as an Israeli, this is your bounden duty to be always prepared for such kind of a situation? I might say that we are always prepared in some way. I think most Israelis are always prepared to jump into a bomb shelter. This time around, ever since the end of December, we are prepped. I mean that most Israelis I know, if they want to plan trips abroad, something, big events, they're thinking twice because they say, oh, we might have something with Iran soon. I talked about logistics as well. This is something that everybody talks about. I think that except Modi's visit and the coming war with Iran, that was the two hot topics that every Israeli spoke about the past 2 weeks. Yes, I can actually gather that Israelis seem to be always prepared and they are very brave when it comes to the Israelis. But taking you to Prime Minister Netanyahu's statements recently, in which he probably tried to suggest that basically it's not the fight against the Iranian people, it's the fight against the Khamenei regime, because in fact, the Iranian people are suffering because of this regime is what he's trying to suggest, isn't it? Yes, I agree. I think that we have a common villain, which is the extremist Islamic regime of Iran.
that made the Iranian people suffer for too long. I wanna mention that before the Islamic regime has taken over the Iran democracy by the Shah were actually good friends with Israel. Israelis went to Tehran for tour, for business, and I have many friends from Iranian origin, and they hope they can come back to Iran after this. When the riots and the revolution in Iran started a few months ago, I think that the first thing I did was texting my friends, Iranian friends, asking them, is the family okay? Are you okay? Do you have anything to say, anything? We feel like we have a shared goal and a shared future, not just past. They said that they look up to Israel and the US, and they really hope that we're going to be involved in order to free them as well. I think, again, it's much more bigger. What is going on today is much more bigger than a small regional conflict. It's the good against bad in the Middle East. Israel is being a part, not just because we're Israel. It's because we're the only democracy in the Middle East, and we are willing to bear another war for the people of Iran to have their peace. That's right, Nova. But at the same time, you have the support of the Americans, which is very good about it. Yes. But when it comes to the theater of war, and when we actually picturize the situation in our minds, we basically think that for the Americans, it's not always something which is actually going to harm them physically. But when it comes to Israel, Israel normally becomes an automatic target for the Iranians or anybody who is actually trying to support the Iranians. Do you think that this is a dichotomous situation, and this also comes into the minds of the average Israelis like you? You are not mistaken. I think we are in this form of war. Again, it just started. I have I don't have new information to share, but your theory is not wrong. We are going to suffer. We have suffered because of America's wishes to do that. But at the same time, I think this war is very different. As I said, we are willing to do so because without America, we have also suffered from Iranian regime many times. The last war in May and June is the best example. We also had two major attacks in 2024. A huge baggage of ballistic missiles were fired to Israel in October 2024 and in April 2024. That was very scary. I remember that. We were lucky enough to get the help of the UK, the US, and the Jordanian to help them fire all of those missiles before they touched the ground, most of them. 99% of the missiles were fired and exploded in the air. I think this time around, we are the ones who are helping the Americans. We're friends, we're allies. This is what you do in times of war and emergency. Definitely. This is what it is all about. But at the same time, coming back to you and the entire area that you are actually right now standing in, I mean, all of a sudden it seems that there's nobody in that area, no movement, nothing. Probably it is very important for us to know as to what happens when such kind of sirens go around and what happens when your alerts come. How is it that you people react to the situation? So when you're in a big city like I live, Tel Aviv, again, I'm in the south now at a very small kibbutz from my in-laws, so it's always quiet here. But in Tel Aviv, once you get that alarm, everybody stops the car, stop everything they do, and run sometimes to find a bomb shelter. Sometimes even in the street, you walk into a building of people you don't know, a store, a shopping mall, a government buildings, and you're very welcome to stay in the bomb shelter. I think that the solidarity we have as Israeli nation is very strong. You will have a place, you will have food, water, and shelter everywhere you will go during this time of war. We don't close the door through anyone. So it's very easy to find the bomb shelters within meters of where you are in big cities and also in small cities. If you're on the road,
this is something that most people fear, to be on the road once the alarm starts. We have, I think, very similar recommendation to lay beside your car on the side of the of the road next to a wall or a big stone. Cover your head and hope for the best. I'm so happy to know all these things and the way you are spirited and prepared for all this. I have with me my co-panelist, Chopraji, who's a defense expert. Probably on the aspect of the defense, he would rather like to ask something from you. Chopraji, please go ahead. First of all, I'm an ex-Indian Air Force pilot, and it's always great to be associated with a colleague of mine in Israel. And I know that, I've heard from so many people out there. They're my friends there in Israel who tell me about how they get into the bunkers every now and then when such an alarm is sounded. What I would like to just know is that now Iran does not have really the power to come and invade Israel. The distance is too much. They do not have the air power or the naval power to do that. Neither the Strait of Hormuz we were afraid about that they may have a naval blockade. Even that won't be possible for long. But what kind of a damage are you seeing now? Because after 7 months, when such a big attack happens on Iran, it's not that they will not retaliate. Now, there are two fronts I am suspecting. Of course, first is we are already getting the news that they have fired the missiles. And also, I have this news that maybe the militia around Hezbollah and all may be activated again. So what do you have to take on this? So you're not mistaken. Most of the threats and the attacks we have been suffered from for the past war and strikes ever since 2024 were by air. Missiles, ballistic missiles, I'm coming. My family here is like, come to the bomb shelter. But I'm very close, it's okay. This time we expect by air, again. They don't have, again, as you said, the naval power to attack us. It only started an hour, 2 hours ago. I'm not a prophet. I want to wish that our neighbors or the militias around Israel or inside Israel, like you have mentioned, will not be a part of this again. I think that the fact that our big war has ended 4 months ago with 7 fronts will be maybe a lesson for them not to try us again. और बिल्कुल, और नोवा, आप चूंकि इजराइल में मौजूद हैं और आपको एक बार बता दें, अपने दर्शकों को बता दें, हमारे तमाम सहयोगी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षय चोपड़ा स्वाधीन लीडर हमारे साथ जुड़े हैं, और नोवा मुजफ्फी हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि पूर्व आईडीएफ ऑफिसर है, यानी इजराइल डिफेंस सिस्टम का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा रही हैं। ऐसे में नोवा, इस वक्त ये अहम खबर भी सामने आ रही है कि अब ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। 50 से ज्यादा मिसाइलें अब ईरान ने इजराइल पर दागी हैं, उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। और चूंकि आप आईडीएफ के साथ रही हैं, काम किया है, ऐसे में इस वक्त नोवा आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप अपने जो इजराइल में रहने वाले लोग हैं उनको देंगे, किस तरीके से वो अपना बचाव कर पाए। नोवा, I'm sorry, I didn't get the last question. There's a lot going on here. हम चाहेंगे कि आप भी बहुत सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार आप ये बता रही हैं कि आपकी जो फैमिली है वो आपको बुला रही है, वो चाहती है कि वो सेफ रहें। Hindi bola tora, but again, I understand Hindi, but it's a very stressful morning. I'm seen very calm, but it is very stressful morning here. Everybody is very worried about their family and kids. Again, as I said, it's the first war. I have a baby girl with me, 5 months old. But we have a lot of faith and trust on the Israeli army, American army. And I think that one thing that we know that they're going to do their best to keep us safe. Everybody has a bomb shelter. Everybody has a safe zone. And as I said, most Israelis are trained themselves. My husband is a very senior officer as well. I come from a family of army people. We're going to do our best to take care of everyone in our house and outside of our house. Okay, नोवा। और संजीव, एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 30 से ज्यादा मिसाइलों से अब इजराइल पर ईरान ने हमला किया है। लगातार ये बात की जा रही थी कि ईरान भी जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर भी दी है।
इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वी शुड फर्स्ट एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स एज टू व्हाट नोवा हैज टू से एंड थिंग्स ही हैज एक्चुअली सेड इन इंग्लिश। और ये जरूरी होगा अपने दर्शकों को बताना कि नोवा इस वक्त जहां पर है वो वैसी जगह है जो कि एक बॉम्ब शेल्टर के पास है, और कभी भी आसमान में कोई मिसाइल आ सकता है, इस बात की एक जो आशंका रहती है, खतरा रहता है। वो बता रही है कि वो एक ऑफिसर थी आईडीएफ में, उनके पति भी ऑफिसर हैं आईडीएफ में, हर हस्बैंड ऑल्सो, और वो पूरा परिवार इस वक्त एक बॉम्ब शेल्टर में है। और इजरायलीज हमेशा दे ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, हमेशा वो तैयार रहते हैं इन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की मान्यता है कि दरअसल ये संघर्ष ही उन्हें शांति की तरफ ले जाएगा। दिस स्ट्रगल विल एक्चुअली लीड देम टू पीस। और इसमें वो मानते हैं कि एक कर्तव्य है जो कि उन्हें करना है एक इजरायली होने के नाते। उन्होंने आज से 7 मंथ्स अगो एक वॉर को देखा है और वो अनफिनिश्ड एजेंडा की तरफ था,